हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर आलम टेक्निकल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सैमसंग M31S का ब्रोकन ग्लास किस तरीके से रिप्लेसमेंट करते हैं वो चीज़ डिटेल से दिखाने वाला हूँ। जिसमें फर्स्ट स्टेप में इसके ब्रोकन ग्लास को वायर के ज़रिए मैं किस तरीके से निकालता हूँ, और मैं वायर ग्लास के अंदर किस तरीके से डालता हूँ वो चीज़ मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और मैं वायर कौन सा MM का यूज़ करता हूँ वो चीज़ भी बताने वाला हूँ। और जो सेकेंड स्टेप होता है उसमें इसके जो ग्लास उतारने के बाद जो ग्लू रह जाता है, कई बार होता है कि आप इसमें लिक्विड डाल के इसको कुचलते रहते हो, हटाते रहते हो, लेकिन क्लीन नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में ऐसा तरीका बताया कि अगर आप उस तरीके से ग्लू हटाओगे ना तो बहुत ही आसानी से आपका ग्लू रिमूव हो जाएगा। और थर्ड स्टेप में मैं इसको बिना खोले इसकी पंचिंग मशीन में करने वाला हूँ। इसमें विद ओसी वाला ग्लास यूज़ करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसको बिना खोले इसको बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको भी मुझसे मोबाइल रिपेयरिंग करानी है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ एक नंबर मिला हुआ है, यहाँ इस नंबर पे भी कॉल या मैसेज कर सकते हो। ये मेरा असिस्टेंट का नंबर है। ये नंबर वही संभालता है जिस पे आपके हर मैसेज का रिप्लाई मिलने वाला है, मोबाइल से रिलेटेड, मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आपको मुझसे मोबाइल रिपेयरिंग करानी है तो या तो आप मुझे इंस्टा पे DM करो, इंस्टा पे मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको मेरे असिस्टेंट से बात करनी है तो यहाँ आपको नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पे आप सबसे पहले तो मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करें जिसमें आप अपने फ़ोन की वीडियो और फ़ोटो बना के भेजें, जिससे कि मुझे आइडिया हो जाए मेरे असिस्टेंट को कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो उस हिसाब से मैं आपको बिल्कुल वाजिब प्राइस में आपका काम करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग करानी है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और दोस्तों मैंने आपके हर कमेंट का रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। व्हाट्सअप पे मैंने सारे कमेंट का रिप्लाई कर दिया है। अब इंस्टा के मैसेज का मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। तो दोस्तों इंस्टा पे कम से कम मेरे को 400 मैसेज का रिप्लाई आया हुआ है, जिसमें से मैंने 100 के मैसेज का रिप्लाई कर चुका हूँ। बाकी के मैं धीरे धीरे करने वाला हूँ। तो दोस्तों 10 तारीख के बाद से मैं यूट्यूब पे भी कोशिश करूँगा कि आपके हर मैसेज का रिप्लाई करूँ। तो दोस्तों मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग करानी तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैसेज ही करें जिसमें आपके अपने मोबाइल की फ़ोटो और वीडियो बना के भेज दें, जिससे कि हमें आइडिया हो जाए कि आपके प्रॉब्लम में क्या दिक्कत है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि सैमसंग M31S का ग्लास किस तरीके से चेंज करते हैं। पंच होल वाली डिस्प्ले ये इसको किस तरीके से बनाते हैं बिल्कुल डिटेल से दिखाया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। Of times through color glass
was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile.
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और दोस्तों अगर आपको मुझसे मोबाइल रिपेयरिंग करानी है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा असिस्टेंट का नंबर है, वो आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने वाला है। और मुझसे बात करनी है तो आप इंस्टा पे आ सकते हैं, इंस्टा ID सुपर आलम टेक्निकल के नाम से है और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का दे रखा है, तो आप उसके ज़रिए भी मेरे पास आ सकते हैं। और तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।